Good morning to all the participants. Today we have very useful and informative lecture by Shri Tushar Bandyopadhyay ji. He is Assistant Director in the Indian Institute of Packaging, New Delhi, and he will be delivering his lectures on the transport packaging performance assessment for e-commerce and supply chain management. Sir is very well known in the packaging area. He has more than 30 years of experience. So by this, since Ministry of, it is in the Ministry of Commerce comes the Indian Institute of Packaging. So he will be dealing with various uses, utilizations, norms about this. So you will be greatly benefited, as the title also indicates, about the smart packaging supply chain. So I hand over to Bandyopadhyay sir to kindly continue the lecture. Thank you very much, Dr. Shukla, for introducing me and calling me from IIP Delhi as a long distance. Okay, I am also give you thanks that you are here to listen the packaging. Okay, so packaging, you see, is a subject that is always neglected. The people are initially the people are making product, and after making the product they are thinking that we have to make it pack, we have to send, we have to transport it to the consumer. That is the main problem of packaging. The consciousness of packaging is very important, and to protect your product, to reach your product to the ultimate consumer. That's the main objectives. So we should think before making a product. We should think about the packaging. That is the main objectives. Okay. So IIP, Indian Institute of Packaging, you see, I'll first tell you what is Indian Institute of Packaging. Let me tell what is Indian Institute of Packaging. Indian Institute of Packaging is an autonomous body established in 1966 under Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Okay. Our institute has been established in Mumbai, 1966. That is the head office of IIP. Objectives, what are the objectives of this packaging institute? At that moment, you see, 1966, you see, it's around 60 years back. Our visionary leaders and the industry people, they think that we are in a backfield for export especially. We are making a lot of products. We are sending it bulk to the other countries in Europe and USA. And they are packing it and they are selling it. And they are also distributing to India for promoting, for giving their brands. So the producer is India, but the brand is created by the European countries and especially USA. So that time our government thinks that we should have some knowledge about packaging, and that's why it has been established. The main objective was to promote export market. That is the main objective. Because if you make your brand and if you send it to other countries, okay, so India will be the producer. Then we will know that India is the producer, okay, and market will be flourished. That's the main objective. Second, to support packaging industries. Okay, the packaging industries, at that time, a very small quantity of packaging industries were there. Only they are making wooden boxes, steel drums. Okay, this type of packaging was there, and they are making only for bulk export or bulk packaging. And you cannot, because you are very young, you have not seen that in our early age. When I was around 10 or 12 years old, I have never seen a material that is sold in packaged form. Everything is sold in the open market. Tell it sugar or tell it salt, anything you have open market. And that time a lot of waste was happening. Nowadays, you see, every material is packed and it is coming to you in a safe and sound condition. That is the main importance of packaging. Okay, now the third
was the upgrade overall standard of packaging, that is also another objective, to provide packaging solutions. What is the solutions? Because the people do not know which pack should be used for which packages, which product. That is the main objectives. So to upgrade and give them knowledge how to pack and what are the materials used for your product. And the last was the formulate packaging specification. What is the specification? Like I am making a package. What is the size of the package? What is the quality parameters of the package? Okay. So that has to be made. Like you are packing in a corrugated boxes. Corrugated boxes is made of paper. And how many number of ply? How to do the grammage of the paper? What is the burst factor of the paper? In this way, a lot of technical things are there, for packaging. Okay. Now you see our centers. We have total 8 centers, having the head office at Mumbai. We have at Delhi. We are in Chennai. We are in Bangalore. We are in Ahmedabad. We are in Lucknow. We are in Hyderabad. We are in now, recently, we have opened a Lucknow center, recently. And also a Visakhapatnam center, that has not been come here. Recently we have opened it. And we are in Kolkata and we are in Delhi. So, in 1966, IIP Mumbai center was opened. And then one by one, Chennai, Kolkata, then Delhi, then Ahmedabad, Hyderabad. In this way, recently we have made the Visakhapatnam center. Okay. So, what we are doing here, so many centers are there, but most of the people of India do not know what is packaging technology and what there is an institute, Indian Institute of Packaging. So very low, small quantity of people may know this. But the industry knows it. The industry, we have students all over the multinational companies. Okay. So they know IIP. Because for the development of packaging, IIP's role is most important. Every industry we have students. Where product is manufacturing, where product is packaging. Every industry we have students. Okay. Now, come to our activities. What are our activities? Let me tell you. Research and development is one of the parts. That is for packaging only. Okay. Second is, this is the most important section is a testing and certification. That is a commercial part of our organization. We are providing testing services and consultancy, certification services to all the industry and any people who are coming here. We are providing this testing and testing facilities for packaging material. What is certification? You see, if you want to send any hazardous items from India to other countries, English is okay, na? Yes, sir. Huh? No problem? No problem. Sometimes I may use Hindi also. Okay, sir. Okay. So, when we are sent, the industry is trying to send any hazardous items like battery, like chemicals, like sanitizer, alcohol. So that some item is hazardous in terms of corrosiveness, some items are hazardous in terms of flammable, and some is items is very corrosive. This type of items, when you try to send to outer country by sea or by air, you must have a certificate of safety of packaging. That IIP is providing. Okay, this testing and certification. Consultancy, we have another service, consultancy. Like a company, they are facing any problem on packaging. Like they are packing it, but the product is not in a good condition when it is reaching to the consumer. Okay. In that case, what is the problem? Whether they have used the proper packaging or they have used the proper technology for pack it. So that type of consultancy we are also providing. We have also training and education. That is the second largest part of our things, because we are producing students from 1976. We have started producing students, postgraduate diploma in packaging technology. Now,
We have postgraduate diploma in packaging technology. We have masters of science, MS in packaging technology, 2 years course. BSc in packaging technology course, 4 years course. BMS, that is a management related to packaging only. Okay, that is also another course. We have a distance education program from IIP Mumbai. Distance education program, 1.5 year distance education program. We have a certified engineer in packaging technology, have a course that is an online course organized from IIP Chennai. Okay, we have 3-month certificate course for industry people, like the people who want to establish the packaging industry, they are coming here for 3-month certificate only. Okay, these are the training and education. We have publication section also. We are publishing two magazines. One is Packaging India magazines. Another is Journals of Packaging Technology. Okay, these 2 magazines we are publishing. Exhibition in conference. Exhibition in conference means we are organizing exhibition. We are also organizing conference, technical conference. We are going to organize a new conference, recent conference in the month of March. I have shared the details to Dr. Shukla. Okay, you can have it, you can see. Very informative. It's a 3 days seminar in Delhi itself. Okay, first day, total technical sessions on sustainable packaging, especially sustainable packaging, biodegradable packaging, and application of AI in packaging. This is the main topic of the subject. That is 5S. So second day is a packathon and also parallel session with technical session. What is packathon? Packathon is a program where the startup who have started any new things, new packaging or new materials, packaging materials, they can showcase their product, and there is a competition between them. And the first have been given a prize of 75,000. The second will have a prize of 50,000. In this way, we are also presenting prize to the startups. Okay. And third day, research conclave plus parallel session of technical session. Research conclave, the students who are doing research on packaging fields, so they can showcase their research article, they can present their research articles. Okay. And technical parallel technical session will be there. Okay, now come to the main topic. This I have already told you. Now come to the topic. Okay, what is packaging? Definition, you see, packaging is the science, art and technology of enclosing products to protect them till it reaches to the ultimate consumer in safe and sound condition at lowest cost. This is the one-line definition. You see, this definition I tell you is telling that packaging is not only science. A science person cannot do all the functions of packaging. It is a science, it is an art. Art means humanities. It is required. History is required for making packaging. Okay. It is a technology. Okay. So these 3 things is there: science, art, technology. Do you think the commerce is not involved here? Yes, it is cost. Last word, it is at the lowest cost. First. Second, preservation. It is enhancing the shelf life of the product. It is transporting from one place to another place and reaching there after 1 month or 2 months. It is protecting it by preservation, which it is giving shelf life. Okay. Third is the presentation. What is presentation? You see, there is a label. Okay. There is a beautiful color, attractive color, so that like dress, human people are wearing very beautiful dresses, to present them everywhere.
So in the same way, packaging is also giving presentation. Fourth is the promotion. What is promotion? Promotion is marketing. It is marketing itself. A person is not required to market a package. The package is marketing itself. I am this. I have these benefits. I have these constituents. Okay. I can give you these things. So it is marketing itself by writing it on the package. Fifth is the value addition. Is it not adding value of the product? One potato cost only 25 rupees, 25 paisa, not rupees. But you are selling it in 10 rupees by packing it, making it chips. Is it not? It is adding values. Is it not? Yes. Like tomato. At my early age, I have seen that a lot of tomatoes were spoiling in the field itself. It was not sold in the market. But nowadays, a single potato will not waste. It has been converted into potato sauce. It has been converted into tomato puree. So ketchup, everything it is made. So now you see the importance of packaging. Okay. I remember one thing when I was only 20 years old. That time it is also the shampoo was also not available in the market in a very 1 rupee pouch. Okay, this 1 rupee pouch, it has enhanced the sale of the product. Initially, a bottle has to be purchased, a 70 ml bottle, and that cost around 100 rupees. The poor people cannot able to purchase that shampoo. But nowadays, everyone is purchasing one packet of shampoo because of packaging only. Okay, so it has added the value. It has enhanced the market also. High consumption in the market. So this is packaging. This is the importance of packaging. But we are neglecting it. Is it not? Yes. We are neglecting it. We are making the product and then we are preparing the package. Okay. Now the types of packaging, I think everyone knows types of packaging. The primary packaging, that is coming in contact, direct contact with the product. Okay. That is the most important part of the packaging to enhance the shelf life, especially to give its protection against environment, microorganisms, everything. This is primary packaging. Also, this primary packaging, you see, it should be very safe for consumption of the product. If the packaging, when it is coming in contact with the food items or pharmaceutical items, there may be a contamination between the package and the product. There may be some migrants, this migration, there may be some migration from the package to the food. So that should be safe enough to make it healthy food, not only giving the preservation. People are adding preservations and preservatives. People are adding preservatives to give the shelf life of the product. In the same way, you see, this migration is also important factor nowadays. The Food Safety Authority of India have a regulations of migration values. Okay, the food items should not be that is coming in contact with the package the package should not migrate the harmful items from the package to the food. And there has been a limit the government has been specified, that is 60 ppm per liter or 10 milligram per DMS square. Okay, so that I will discuss later. Let me go first. The secondary packaging, it is giving the shape, it is giving the beautiful surface for printing, like folding cartons, spices. You see that the spices is packed in a pouch and then it has been kept in a folding carton. That is secondary packaging. And the transport and the tertiary packaging in the box, corrugated boxes. Tertiary packaging may be different. It may be other packaging also, wooden boxes, it may be metal box, depending upon the strength of the
product required. Now, come to the transport, the main topic, transport. Okay. Transport, you see, plays an important role in e-commerce, and the topic is e-commerce, no? Yes. So e-commerce and supply chain management. Okay. It ensures safety of product from origin to the original product to the consumer. Okay. So you have to protect the safety. You have to protect your product. आपके पास जो product है, that should be reach to the ultimate consumer in a safe and sound condition. That is the main objectives. In case of horticulture items, you know, some of the horticulture items are very delicate and shelf life is very less, and some of the horticulture item may sustain around 6 months also. Like walnut is also a horticulture product, and if we do not give much protection, the walnut can, I think, save in a safe condition for after 3 months also. If we pack it properly, then you can sell it after 1 year also. Okay. In the same way, this is important for especially horticulture item. Packaging is important. Very difficult, I tell you. Packaging a horticulture item like the perishable vegetables, perishable foods is very challenging matter. It is a challenge. Okay, I'll come in that topic. Other items, that is dry items, fatty items, or hygroscopic items, that is easy nowadays to pack and give shelf life, more shelf life. But it is a challenging factor for horticulture items, that is perishable, more perishable. Now, see, what is transport packaging? Now come to the transport packaging. Transport packaging refers to packaging that protect goods during handling, storage, transportation and distribution. That is the main objectives. Okay. If product is packed in a primary packaging, secondary packaging and the transport packaging, you can protect the product for a long time. But a horticulture product like apple, you cannot make packing like that. We have to directly pack it in a box or in a plastic crate. Okay. Why? Because like apple, let us consider as apple. Apple is moderately perishable, not highly perishable. Perishable. It is moderately perishable. Means you can keep the apples, I think 6 months, even 9 months you can keep it. Nowadays, by doing packing and cold chain, in a good cold chain, I think cold storage. More than 12 months. 12 months, no? Yes. Yeah, nowadays it's 12 months. You are giving coating on the apple, food grade coating. Yes. You are packing it in such a way so that release of moisture, means breathing rate can be controlled. And also by controlling MAP packaging, I think you know the MAP packaging. By controlling the carbon dioxide and oxygen percentage, you can control this breathing and photosynthesis rates. Yes. Okay. So in case of apples packaging especially and other orange packaging, the nature has itself made a beautiful packaging for orange. If you consider one drop of juice has been packed so delicately, and this one drop of packet has been arranged in such a way that make a secondary packaging, and all the secondary packaging has been arranged in such a way that make a round shape and give another packaging. So the primary packaging is there, secondary packaging is there, and tertiary packaging is also there. But the outer packaging, it cannot protect the product because it is continuously breathing. To control the breathing rate and to control this photosynthesis, we have to make MAP packaging. We have to pack it in a film. We have to pack it in film, breathable film, to enhance the shelf life. In case of orange. Okay. In this way, depending upon the product, fruits, especially leafy fruits, leafy vegetables. Leafy vegetables is very perishable, highly perishable items. It is a challenging factor for packing these things. Only the MAF and the cold chain is only the options for giving the shelf life of the leafy vegetables.
E-commerce, I think you know e-commerce nowadays, है ना? At home you can have everything, है ना? You can have everything, Blinkit, है ना? Amazon, है ना? Flipkart. Yes, a lot of things. I don't know all of them, but a lot of people are e-commerce are there. But you see, the e-commerce is a challenging factor because a single unit you have to sell to the consumer in a safe and sound condition. You can notice their packaging, how delicately they are doing the packaging. Okay, so what is the means when you are making export, you are packing it and send it to the other industry in the country, other countries, and they are selling it in the market. But here, every item, single item has to be reached to the consumer. And so complex transport system, individual people you have to send. So it's a complex delivery routes, multiple handling points, different we have to, and high risk of damage and returns. Which raw material you have to purchase? What is the quality of the raw material? For your packaging, you should know also the specification of the packaging, procured packaging materials. Got my point? It's a very important factor. आप क्या परचेस कर रहे हो आपको जानना जरूरी है. जैसे मैं बॉक्स परचेस कर लिया, अरे जो बॉक्स मुझे दिया है whether this box is suitable for my package, but बॉक्स में मॉइस्चर ज्यादा है, that will damage my product. So moisture content is also important. What is the strength? How can I understand the strength of the box? Okay, so you have to understand the material of the packaging that you are going to purchase. Procurement and purchasing, that is also important. Now, manufacturing and production planning, that is also part of the supply management. Inventory and warehouse management is also part of the supply chain. Transportation and distribution. You see, transportation, it is not coming in our control. ना? मैंने ट्रक में भर दिया और मटेरियल लेके कहीं बॉम्बे में वहाँ डाउन करेगा. We don't know what is happening during the transportation. है ना? रास्ता में कितना बम्पर है, कितना स्पीड में चलाता है, कितना ब्रेक डालते हैं, बॉक्स को कैसे रखते हैं, हम तो सजा के दिया है properly, but whether it is in a proper condition during transportation. So that is the most challenging, the transportation. So during the transportation, the hazard is very high. Okay, so we have to understand what are the problems in the transport. What may happen during transportation. That is my topic actually. Okay. And last, consumer delivery. Customer delivery and returns. That's also part of supply chain management. Okay. Any question इसमें? कोई question है? ठीक है. Any queries are there? So you can ask immediately. also. Okay. अच्छा, all people are related to they are students or they are planning startup. for their startup and Okay. entrepreneurship unit, post-harvest management, food technology and this Okay. vegetables means horticulture produce का ही कैसे better Okay. utilization करेंगे. So they need this supply Correct. chain and Yeah, all yeah. this Yeah, packaging. yeah. Let me now come hazards during transportation. That is the most important thing, because you have packed it, and I tell you how to pack it verbally, but the talk that requires 2 days training. Okay, but I am just going to the transport packaging. Okay. And how you have to consider the transport, because you are doing business and you have to send your material to the ultimate consumer. So you should know what are the hazards that your product is facing during transportation, during storage, during delivery. That you should know. And if you know the problems, you can have a solution for that. Okay, like you see, like I am coming from Delhi. Okay, I know Kashmir is now very cold, Yes, है ना? it is. Temperature is very low, है ना? In day it is
7 degree or 10 degree Celsius. At night it may be near to 0. Minus. So I have to take a lot of dresses. Still I am facing cold. Okay. So I know what may happen in Kashmir. If I do not know, then what will happen? I'll just take a t-shirt that like in Delhi people are now wandering with t-shirts. So what will happen to me? I will be in a क्या condition हो जाता मेरा? So that's why you are sending your child. The product is your child, and the packaging is the mother. So you have to manage proper mother. You have to manage a proper packaging for your child, for your product, to send it to the market. So during this, from the packing to the delivery, what are the different problems your child is facing? That you have to know. Okay, that I am just discussing you, and accordingly I will tell what I have to do at your end, what you have to do before packing your product. Okay? सर कुछ पानी का बॉटल मिला. Now you see hazards during transportation. First, mechanical hazards. Mechanical hazards क्या है? Shock means impact. एक लेबर आपका मटेरियल बॉक्स पैक करके ले जा रहे हैं, गिरा दिया उसने. That is an impact. आपको रेलवे में आपने लोड कर दिया. रेलवे में आपको पता है शंटिंग होता है. Yes, sir. शंटिंग मशीन लगता है ना, में इंजन लगता है, ठा आवाज होता है, एंड देन इट इज गिविंग इम्पैक्ट. एक बॉक्स और बॉक्स दीवार के साथ इम्पैक्टिंग होता है. आप ट्रैक में जा रहा है, रास्ता, रोड कंडीशन इज वेरी bad. If the road condition is very bad, nowadays road is very good, but still there is a bumping vibration, and this vibration, your product inside, what is happening, you should consider that also. The box has been kept in a trap or in a railway wagon, one by one, in a stacking condition. एक के ऊपर एक रखा जाता है ना, and the lowest box is working as a coolie. He is carrying all the load on his head. So whether this box can sustain this load continuously during this transportation and vibration. Okay, so these are the mechanical hazards a product can bear during transportation. That is the most important thing. You should know what are the hazards may happen. Okay, this is the mechanical. Now come to the climatic and environmental hazards. Temperature variation. Now here is 7 degree or 11 degree, but if you send to South India, Chennai, the temperature is around 40 degree. So temperature may be vary. If it is a leafy vegetable and it reaches to Chennai in the same condition, what will happen? It will quickly dry up. So in this way, so temperature variation is also here. I am giving one example. Like you see, it was around 20 years back, 20-25 years back, and I have just joined IIP, this organization, Indian Institute of Packaging. Our company approaches our director to say that we have sent a T-shirt to USA, sorry, not USA, Russia, and the T-shirt was packed in a pouch, means bag, small bag होता था ना. T-shirt एक बैग में एक प्लास्टिक का पाउच में डालते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं, बॉक्स में करके भेज देते हैं. तो when we have sent it to Russia, so Russia से कंप्लेन आया है जो कोई प्लास्टिक का पैकेट नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर कुछ पाउडर पड़ा हुआ है और सारे टी शर्ट खुला हुआ है. हमने बॉक्स में कैसे पैक करके रखा है, पूरा पाउडर भरा है उसके अंदर. So what was the problem? The problem is the temperature variation. You see the PVC materials. At that time, PVC was used as a bag for keeping the t-shirts. If it goes beyond 20 degrees Celsius, low minus
20 degrees Celsius. All the PVC molecules chains broken and makes it powder form. Okay, so that has happened too because it has gone to Russia at the winter time. So that is the problem. So the temperature variation is most important. And nowadays no PVC packet is used for packing of these garments items. Now it is packing in LDP or PP bag or PET bag. Humidity and moisture, the second climatic hazard, humidity and moisture. It will happen in case of hygroscopic material, like chips. If the chips you keep here, nothing will happen after even 8 hours. But if you keep the same chips in open condition at Chennai, within 2 hours it will be soggy and it will not be edible because it will absorb moisture and become soggy. So we have to protect our product from this environmental moisture, humidity. If I am sending some material to Chennai or Mumbai, humidity is very high, the shelf life will be less in a pouch. And if you kept a chips pouch in Kashmir or in Delhi, it's a very dry region. So the shelf life may be 1 year. But that pouch, if you keep it in Chennai or Mumbai, the shelf life will be around 6 to 9 months. So due to humidity and moisture, your product is also getting them spoiled. Okay. Now come to light. This light is bad for your product. Not all the products. Some of the products are very. This UV light, and also the light, especially some pharmaceutical light, that is very sensitive to light also. So that is also a hazard for your product during transportation. Now come to the chemical hazards. What are the chemical hazards may happen? Leakage or vapor from nearby cargo. आपने कार्गो मटेरियल आपका रखा है, उसमें दूसरा मटेरियल अगर केमिकल अगर कुछ है जिसमें वेपर निकलता है और आपका प्रोडक्ट को खराब कर सकता है. That is also, it can happen. It can happen. That's why during packaging you have to consider that. If I sending in a complex cargo, not single cargo, complex cargo, it may go in a complex cargo. Accordingly, you have to pack my product. Okay. Reaction between the products that is happening due to this complex cargo. Migration and leaching. What is migration? I have already told you. Migration, especially in case of plastics packaging. Plastics is made, plastic granules, okay, to make it more flexible or make it more convertible or extrudable. Different additives have been added to plastics. Other traces of that additives which are not helpful for our health, that can migrate from the package to your food items, especially liquid food items. सबसे ज़्यादा liquid food items में होता है चीज़, जैसे edible oil, है ना, is one of the items. आपका alcohols, beers, these are the items. There are some liquid items like fruit juice, sauce. These are liquid items. So in case of liquid item, the chances of migration is very high. Okay. So when you are making a primary packaging, you have to consider, you should ensure that your food items, the plastics should not migrate any items. It may migrate, but very little quantity. It should not be harmful for our human health. Okay, so migration is also important parameter. Leaching, what is leaching? You see, the product sometimes may enter into the packaging system. Have you seen it? आप घर पे कोई प्लास्टिक का अगर कोई मतलब बर्तन यूज करते हो तो देखना कुछ दिन के बाद वो येलोइश हो जाता है. पॉलीप्रोपिलीन का से वो माइक्रो ओवन में गर्म करने के लिए लोग पहले पॉलीप्रोपिलीन यूज करता था, आजकल ग्लास ज़्यादा यूज करते हैं.
क्या होता है कुछ दिन के बाद यूलिश हो जाता है. क्यों यूलिश होता है? This oil and these spices like haldi, turmeric, it is go inside the chain of the plastics. Plastic is a chain, है ना? It's a chain system. One polymer molecule is attached to another polymer molecule with a chain, and there is a gap between this chain, and the oily and the spicy materials that can enter into the item. If it is entering from your food items to the package, what will happen? Your food quality will be yes, deteriorated. It will be deteriorated. So that's why leaching and migration is another important factor for primary, especially primary packaging. Okay. Why you are not using pouches? जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, आपने कभी देखा सरसों का तेल मस्टर्ड वो पाउच में बिक रहा है? Yes, sir. देखा है? Yes, sir. That's the wrong thing. Why? Because after 3 months, the sarson tel will not be the mustard oil. This flavor, it goes down, all goes. Because this mustard oil have a special flavor. You know that Yes. the North Indian people were using this sarson ka tel. So this flavor is very hygroscopic in nature. If you keep it here, it will go on evaporating. And it is going through the plastics, pouches. If you use PET bottle, in that case, the chance is very less. But if you are using PET bottle, flexible pouches, it will go out, continuously go out, and within 3 months, the flavor of the sarson tel will go. Okay. So, but other edible oils, it is packing in pouches. Okay. So, you have to, in that case, you have to think that leaching or especially spices, tea, coffee, that have their own flavor. Is it not? We have to protect that flavor inside the package. And when you are packing it, you have to consider, you have to think about the leaching characteristics of the product. Corrosion of metals, कभी कभी मेटल का पैकिंग होता है, जैसे टीन कैन में पैक होता है ना, टीन एक्चुअली तो टीन करके नहीं है, टीन का कोटिंग होता है, जो स्टील का शीट है उसके ऊपर टीन का कोटिंग होता है, फिर उसके ऊपर लैकरिंग होता है. लैकरिंग वर्ड सुना आपने? फूड आइटम्स में सुना है? लैकरिंग इज इम्पोर्टेंट. फूड आइटम स्पेशली मिल्क पाउडर आपको कैन में आता है, बेबी फूड कैन में आता है ना? सम ऑफ द आइटम्स, लिक्विड आइटम्स आल्सो कमिंग इन कैन. सो देयर शुड बी अ लैकर, फूड ग्रेड लैकर. अदरवाइज अगर डायरेक्टली टीन कैन में हम डालेंगे तो corrosive in nature. This tin is corrosive in nature. It can react with your product and it is harmful for our body. That's why in the tin can there is a lacquer coating, yellowish color, no, brownish color lacquer you can see. Okay. Contamination, that you know, it should not become. It may contaminate with the side items. Permeation and reaction with the atmospheric gas. Permeation, you understand now? I have already told you permeation. These are the chemical hazards that may happen during transportation. Sir, timing ठीक है ना? हाँ. चलेगा. हाँ. फिर पैकेजिंग बोलने शुरू करेंगे तो कंटिन्यूअस चलता रहता है. नहीं, आप पूरा करा दें. Now come to the biological hazards. Biological hazards, all you know, there's the insects, rodents, microorganisms, है ना, lead to infection, spoilage, contamination, and this we have to, we can easily protect it from the microorganisms by giving a bottles pack or in a pouch pack. But we do not know whether we are packing the microorganism along with our food items. इसलिए जो environment में आपको पैक करना है, that environment should be sterile. Okay, so microorganisms is also a hazard, है ना? Biological hazards. Insects, rodents. Insects is also a problem. आपको चूहा खा जाता है, that is also another problem, है ना? So you have to consider all these things when you are doing the packaging materials. Now, the most important is the handling hazards.
रफ हैंडलिंग बाय द वर्कर, आपका ट्रांसपोर्ट बैग यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो अगर रफली हैंडलिंग हो रहा है, होता है, वी डोंट हैव एनी मतलब कंट्रोल ऑन दैट, दे कैन हैंडल इट, तो कंसिडरिंग दैट रफ हैंडलिंग वी हैव टू प्रिपेयर आवर पैकेज। इम्प्रॉपर यूज ऑफ बुक्स, शार्प टूल्स, आपने देखा होगा बोरी है ना, जैसे प्लास्टिक का सैक आता है, बैग आता है ना, उसमें वो सीमेंट का आता था पहले, वो हुक लगा के उसको उठाया करता है, उसमें क्या है आपका प्रोडक्ट निकल जाता है, स्पेशली सीमेंट। तो जब इनिशियली जो सीमेंट का बैग होता था, आजकल हुक यूज करना माना है, क्योंकि सीमेंट का बैग से सारे सीमेंट, आधा सीमेंट निकाल ही जाते थे जब तक हमारे घर तक आता था दुकान से। तो दैट इज ऑल्सो इम्प्रॉपर यूज ऑफ, अगर जूट बैग में कुछ पैकिंग है तो उसमें हुक मार के उठाते हैं, है ना। फोर्कलिफ्ट का भी मिस यूज होता है ना, फटाक से डाल दिया उसके नीचे और उसको पलटी कर दिया, अचानक उठाया। और कन्वेयर बेल्ट में भी कभी कभी मटेरियल गिर सकता है, जो मशीन से जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे आपने कंटेनर, वहाँ पे कंटेनर यहाँ से पैक कर दिया, सीधा कंटेनर आपको सीट में चढ़ जाता है, लेकिन जो ट्रक के थ्रू जाता है या पैलेटाइजेशन नहीं होता है, उसका केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंट मीडियम है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, मेनली यही ट्रांसपोर्ट होता है। अब कौन सा ट्रांसपोर्ट में क्या हैजर्ड्स है, देखिए जो रोड पे जब जाते हैं तो शॉक्स, वाइब्रेशन इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रोड्स में बम्पिंग है ना, वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली होता है। तो और ये दो चीज़ को हमें ज़्यादा जब हम स्टैकिंग कंडीशन में जब उसका वाइब्रेशन होता रहता है तो प्रोडक्ट के ऊपर और पैकेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। नेक्स्ट आपको रेल ट्रांसपोर्ट है। रेल में क्या होता है, रेल में सबसे ज़्यादा कपलिंग एंड शंटिंग जो इशू है, दैट इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट। दूसरा, रेल का जो वाइब्रेशन उतना ट्रिमेंडस नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअसली एक मतलब हार्मोनिक मोशन में वो वाइब्रेशन होता है, हार्मोनिक मोशन। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट यू हैव टू कंसीडर। हार्मोनिक मोशन में कभी कभी क्या होता है, रेलवे ऐसा ऐसा होता है, तो देन इट विल इम्पैक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वैगन। सी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सी ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कूल ट्रांसपोर्ट, बट 5 किलोमीटर्स छोड़ जहाँ से आप चला रहे हो वहाँ से 5 किलोमीटर बहुत रफ सी होता है, रफ सी बोलते हैं, तो वही भी होता है, उसमें बहुत वाइब्रेशन होता है प्रोडक्ट का, पैकेज का। और जहाँ पे आप उसको लास्ट मोमेंट पे जहाँ पे आपको सीट को मतलब मटेरियल डिस्पैच करना है, अनलोड करना है, वहाँ भी 5 किलोमीटर प्रॉब्लम है। बाकी सी में मैक्सिमम प्रॉब्लम में वाइब्रेशन, मैकेनिकल हैजर्ड्स कम है, लेकिन वहाँ पे केमिकल हैजर्ड्स बहुत है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और सॉल्टी एनवायरनमेंट है, उसमें करोजन हो सकता है मटेरियल का। आपका मेटल आइटम्स है पैकेजिंग में तो करोजन हो सकता है। लास्ट एयर ट्रांसपोर्ट, जब एयर फ्लाइट जब ऊपर जाता है या नीचे जब आता है, उस टाइम में वाइब्रेशन बहुत स्पीड में वाइब्रेशन होता है ना। उस वाइब्रेशन को सस्टेन करने के लिए कभी कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक पैकेज है ना, कभी कभी आईसीस खुल जाता है, कभी बल्ब का कनेक्शन खुल जाता है, क्योंकि ड्यू टू वाइब्रेशन ड्यूरिंग जब नीचे आता है, जब ऊपर जाता है इस टाइम। बाकी जो एयर में ट्रांसपोर्ट उतना ज़्यादा है नहीं। Now come to the performance parameters of the package. What are the performance parameters required for where this hazards, different hazards? Strength, you require the strength of the package. You require the cushioning performance of the package. You require the stackability of the package, and you require the moisture resistance and vibration resistance package. Okay. So पैकेजिंग क्या क्या होता है ट्रांसपोर्ट में, वो थोड़ा सा अभी बताते हैं। जैसे कॉर्बेटेड बॉक्स होते हैं प्लास्टिक क्रेट्स, कंटेनर, वुडन पैलेट बॉक्सेस, प्रोटेक्टिव कुशनिंग मटेरियल्स। These are the transport packaging materials that generally you are using. See, these are corrugated boxes, I think you know. This is plastic crates,
जनरली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्लास्टिक क्रेट्स में भी ट्रांसपोर्ट होता है, वुडन बॉक्स एंड वुडन क्रेट्स में भी प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट होता है, और प्रोटेक्टिव कुशनिंग मटेरियल्स, you see protective cushioning materials is also used for giving the protection of the vibration, impact, especially impact and vibration में ये protective cushioning material देते हैं। ये जो फर्स्ट वाला लेफ्ट में आप देख रहे हैं that is called actually honeycomb structure, पेपर से biodegradable पेपर से स्ट्रक्चर है। ये सेकेंड वाला जो है that is called airbag. Nowadays it is coming because LDP airbag is made and this airbag is used as a cushioning material, especially handicapped item that is very perishable. इसके लिए आजकल ये यूज होता है। बहुत पहले से आ रहा था सर, बहुत पहले से, जब हम छोटे से तब से ये। अच्छा, और यूरोपियन कंट्री में तो यूएसए में तो बहुत पहले से यूज होता है, आजकल इंडिया में भी खूब यूज हो रहा है इसका। और ये बबल फिल्म तो सबको पता है ना, बबल फिल्म एलडीपी बबल फिल्म है। और एक स्पेशल इंडिविजुअल जो फ्रूट है उसको पैक करने के लिए पहले यूज करते थे फोम नेट, बट फोम नेट एक्चुअली बैन है आजकल। ईपीई फोम, ईपीई नेट तो कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली है, थर्मोकॉल से थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन गवर्नमेंट बैन करता है क्योंकि वो दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम विद एनवायरनमेंट। आपको थर्मोकॉल का शीट ऐसे घूमते रहते हैं ना, पूरा यार में घूमते रहते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। बट सर इस टाइम इंडिया में मोस्टली हरियाणा और यूपी के जो गुआवा फार्मर्स हैं, गुआवा भी सर इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सर उसमें। अभी तक तो एप्पल्स में ही यूज होता था, हाँ, सर गुआवा में हमारे यूपी में बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, इसको भी यूज होता है, इस तरह से यूज होता है। लेकिन एक्चुअली थर्मोकॉल वाला यूज करना नहीं चाहिए, एज गवर्नमेंट का बैन है सिंगल, लेकिन अभी गवर्नमेंट का पॉलीबैग भी तो बैन कर रखा है, हाँ, ये हो रहा है। तो लेकिन अगर आप एज ए मतलब कंज्यूमर, मतलब एज ए कंज्यूमर आपको सस्ता चाहिए है ना, लेकिन एक्चुअली अगर आप रूल देखने जाएंगे तो ईपी इज द बेस्ट। ईपी थोड़ा सस्ता मतलब महंगा पड़ता है थर्मोकॉल से। एक चीज है मैं आपको बता दूं, वैक्यूम पैकेजिंग। नाउडेज आपने वैक्यूम पैकेज देखा, टाटा का ताजमहल का टी आता है, वैक्यूम पैकेज है। वैक्यूम पैकेज में क्या होता है, जैसे आपको मैं ये दिखाता हूँ, आप मान लो कपड़ा का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कपड़ा है टी-शर्ट से, टी-शर्ट आप एक बॉक्स में मान लीजिए बड़ा सा बॉक्स बनाया, उसमें 60 पीस 60 पीस आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर वैक्यूम पैकेज बनाएंगे तो क्या होता है, उसमें से एयर खींच लेते हैं, तो एक में 60 की जगह 120 भी डाल सकते हैं। सो दैट इज मैनेजिंग द स्पेस। स्पेस मैनेजमेंट करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट कम होता है, लेकिन सब मटेरियल में आप वैक्यूम पैक नहीं कर सकते। आप देखिए ये नीचे वाला जो है ना, खतरा बोलते हैं, आप जानते हैं गुजरात में खूब बिकता है ये वाला, ये वहां पे आप वैक्यूम पैक मिलेगा, है ना। वैक्यूम पैक करने से क्या फायदा होता है मैं बता दूं। जैसे फूड आइटम है, जो फूड आइटम्स आपको फैट है, इसमें फैट रेंसीड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या है, जब आप पैक बना रहा है उसके अंदर एयर है, एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद फैट इन योर प्रोडक्ट एंड वो रेंसीड कर देते, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा कर देते। कोई भी पाउच में होता है ना, थोड़ा सा रेंसीड हो जाता है, इसलिए शेल्फ लाइफ कम हो जाता है उसका। अगर वैक्यूम करके आप उसमें एयर को खींच लिया बाहर, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं, पूरा प्रोडक्ट के साथ वो रैप होकर रहेगा। एक नंबर फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है, स्पेस भी कम लग रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। एक बॉक्स में आप जहां 60 पीस रख सकते थे, अभी 120 पीस रख सकते हैं। तो दैट वैक्यूम पैकिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इट इज आल्सो गिविंग शेल्फ लाइफ, इट इज आल्सो गिविंग द स्पेस, मोर स्पेस। Okay, so vacuum packaging is also another option for some of the products, not all the products. Some of the products which are options. Space management is also important factor. आपने बॉक्स बनाया, देखिए आप मार्केट में आप देखेंगे, जैसे ये ध्यान देना पड़ेगा पैकेज का डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लो कॉस्ट में आपको पैकेजिंग बनाना है, तो आपको जो बॉक्स बनाते हैं, आप बॉक्स के अंदर वाला स्पेस सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये जरूरी है ना। जैसे आप देखेंगे फ्रूटी का पैक, एक ट्रे पैक आता है, उसमें देखें 6 की मल्टीपल होता है,
6 into 12 या तो 12 या तो 25 into 32 इसी मल्टीपल में होता है। अब ये जो पानी बॉटल आता है, आप उसका एक बॉक्स खोल के देखिए, वो 6 का मल्टीपल होगा। वाई 6 का मल्टीपल है? क्योंकि 6 का मल्टीपल बनाएंगे तो जो शेप का बॉक्स बनेगा, दैट शेप ऑफ बॉक्स इज द बेस्ट बॉक्स। वी आर गिविंग मोर स्पेस, टेकिंग मोर स्पेस, इट इज गिविंग मोर स्टेबिलिटी, इट विल गिव मोर कंप्रेशन स्टैकेबिलिटी। कैसे मैं बता दूं? जैसे आपने मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, आपने सोचा मेरे को एक बॉक्स में 10 पैकेट रखना, 10 बोतल रखना, 10 बॉटल्स रखना, और किसी ने सोच लिया मेरे को 12 बोतल रखना। 10 बोतल रखेंगे तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे? 5 करेंगे लेंथ वाइज, 2 करेंगे विड्थ वाइज, 10 पैकेट हो गया। अगर आप बॉक्स कैसे हो गया? बॉक्स का जो बेस है विड्थ छोटा, बहुत छोटा हो गया क्या नहीं? विड्थ छोटा हो गया, लेंथ लंबा हो गया, स्टेबिलिटी कम, स्टैकेबिलिटी कम हो जाएगा उसका। अगर जो 12 कर रहा है उसका क्या ऑप्शन है? 3 into 4, लेंथ वाइज 4, विड्थ वाइज 3। 3 into 4 होने से क्या, उसका बेस थोड़ा बड़ा बन गया, लेंथ थोड़ा कम है, विड्थ भी थोड़ा सा है उसमें, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसका स्टैकेबिलिटी स्ट्रांग होगा, कंप्रेशन ज्यादा ले सकता है। तो इसलिए बॉक्स जब डिजाइन करते हैं, उसके अंदर का स्पेस और स्टेबिलिटी दोनों ध्यान रखना पड़ता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे बोला है ना, मैक्सिमम जो मल्टीनेशनल कंपनीज का बॉक्स आता है, आप उसको खोल के देखिएगा 6 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना? जो लोग 5 का मल्टीपल कर रहा है वो खर्चा भी ज्यादा कर रहा है, अपना बॉक्स का भी वीक बना रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। देखिए, अब 2 बॉक्स है, सबसे लेफ्ट वाला बॉक्स में ले लीजिए आप। लेफ्ट वाला बॉक्स में आपका साइज मान लो 40 into 20 into 20, ये साइज है, ये 40 है, लेंथ 40 है, विड्थ है 20, हाइट भी 40 है। ये बॉक्स है, इसका जो एरिया जो बनता है ये 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर बनता है। मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 40 into 20 into 40, ठीक है? सेम डायमेंशन, लेकिन लेंथ के जगह आपको विड्थ को 40 into 40 into 20 कर दिया। सेकंड बॉक्स देखिए आप, उसका साइज देखिए, ठीक है ना? वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट बन गया। स्पेस मिलेगा, स्पेस यहाँ पे आपको वेस्ट हो रहा है, जहाँ पे सेकंड वाले में, Yes, sir. फर्स्ट वाले में वेस्ट नहीं हो रहा है। तो बॉक्स डिजाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको सेम वॉल्यूम है दोनों का, मतलब आपका जो वॉल्यूम आपको अंदर में सेम मिल रहा है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी, कॉस्ट, ये सबसे नंबर 1 में मिलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए जो लेंथ एंड विड्थ का एक रेशियो होना चाहिए, है ना, 2:1:2, 2:2:1 नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो दैट इज डिजाइन दैट इज रिक्वायर्ड। कुछ समझ में आया क्या नहीं? आ गया। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मैं, कि मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सर, हाँ, है ना? टाइम थोड़ा अगर चाहे तो आप इनको प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, ये बाद में नहीं, आप बता दीजिए, बाकी तो हमारे पास है। ठीक है ना? जो आरएससी टाइप बोलते हैं, रेगुलर स्लॉटेड कंटेनर, ये सबसे मेन ज्यादा। चीजें सर आप दिखा दीजिए। हाँ, मेन चीजें। क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर फिर नए स्पीकर वेट कर रहा है ना, मैं 5 मिनट में खत्म करूँ। हाँ, ठीक है। 10 तो मिनट। इसके बाद मेरा फोन नंबर दे देने हाँ। का स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे लिए, तो 2-3 घंटे चाहिए मिनिमम। तो ये जो आरएससी, ये ध्यान रखिए, रेगुलर स्लॉटेड कंटेनर बॉक्स सबसे ज्यादा यूजेज होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजीली बनता है और अंदर में स्पेस भी सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है ना? ये सारा एक काम याद रखिएगा, आरएससी टाइप। देखिए, स्पेस कैसे मैनेजमेंट करते हैं ट्रांसपोर्ट में। आप देखो, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, व्हाइट कलर का बॉटल रखा हुआ है ना, ये गलत बना है, क्योंकि क्या बना है, 10 का मल्टीपल बना है ना, तो इट्स लॉन्ग बॉक्स हो गया, लंबा बॉक्स हो गया, स्टेबिलिटी कम है। चलो ठीक है, उसका स्पेस को मैं अगर प्रॉपर्ली यूज करना चाहता हूँ, तो राउंड शेप का बॉटल ज्यादा रखते हैं उसके अंदर, तो आप देखिए बीच में कितना गैप है, लॉट ऑफ गैप्स। अगर इसकी बदल में मैं सर्कुलर नहीं यूज करके रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करूं, तो शायद उसमें 2 बोतल और आ जाएंगे, स्पेस पूरा मैनेज हो जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा जाएगा उसमें।
प्रोडक्ट ज़्यादा चला जाएगा ना, क्योंकि आपने रेम से पूरा जो अंदर का जो स्पेस है पूरा आप यूटिलाइज कर लिया बाय मेकिंग इट स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप बॉटल्स. ओके, दैट इज ऑल्सो एन स्पेस मैनेजमेंट. स्पेस मैनेजमेंट ऑल्सो यार इन द कंटेनर में आप जब बॉक्स लोड करते हो, आप जब कंटेनर सोचते हो आपका कंटेनर का हाइट 8 फीट होता है, तो 8 फीट पूरा लेना है मेरे को, क्योंकि कंटेनर जब बुक करते हैं कोई इंडस्ट्री तो कंटेनर पूरा स्पेस तक बुक करना पड़ता है. तो मैं अगर कुछ खाली जगह छोड़ दूं तो मेरा लॉस है. तो इसलिए जो है आपको बॉक्स का डिजाइन कंटेनर के हिसाब से, अगर कोई इंडस्ट्री बनाते हैं कंटेनर बाहर भेजते हैं तो कंटेनर के हिसाब से करना चाहिए, जो मेरे को 8 फीट पूरा स्पेस को यूटिलाइज करना है, उसी हिसाब से बॉक्स का हाइट एंड लेंथ एंड विड्थ हम यूज करेंगे. दैट इज ऑल्सो स्पेस मैनेजमेंट. ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है तो पता ही आपको, इसमें मैं अब ज्यादा करता नहीं हूँ. अब आइए थोड़ा टेस्टिंग में 5 मिनट में बता देता हूँ. टेस्टिंग करके आपको कैसे पता चलता है जो आप जो पैकेज बनाया है वो पैकेज प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट हैजर्ड लेगा क्या नहीं लेगा, है ना, बायोलॉजिकल हैजर्ड लेगा या नहीं लेगा, है ना, आपको केमिकल हैजर्ड लेगा नहीं लेगा. तो केमिकल हैजर्ड लेगा नहीं लेगा वो इनर आपको प्राइमरी पैकेजिंग में टेस्ट करना पड़ता है ना. केमिकल हैजर्ड लेगा नहीं लेगा वो आपको प्राइमरी पैकेजिंग में टेस्ट करना पड़ता है. लेकिन आपको जो पैकेज आपने पूरा बनाया ट्रांसपोर्ट पैकेज, वो आपको ट्रांसपोर्ट हैजर्ड लेगा क्या नहीं लेगा, उसके लिए कुछ टेस्ट है. ठीक है, वो टेस्ट क्या है? वाइब्रेशन टेस्ट. एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर एक टेबल बनाया जाता है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन टेबल. वो वाइब्रेशन टेबल पूरा ट्रांसपोर्ट को सिमुलेट करता है. ट्रांसपोर्ट में जैसे ऐसा कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होता है ना, वो बॉक्स को आप रखिए, आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आइटम हो या फूड आइटम्स हो जो ब्रेकेबल है, बिस्किट है, टैबलेट्स है, वो अगर पैक किया आपने करके आपको ट्रांसपोर्ट में करा, ऐसा तो नहीं बिस्किट टूट जाएगा वाइब्रेशन से, या तो टैबलेट आपने फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स वाइब्रेशन से टूट जाएगा. तो वो आप सिमुलेशन बना के आप लैब में टेस्ट कर सकते हैं, है ना. वो जनरली 180 फ्रीक्वेंसी में 1 इंच एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन होता है, और 1 आवर वाइब्रेशन इज इक्विवेलेंट टू जनरली 1500 किलोमीटर माना जाता है एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स. ठीक है, 1 घंटा अगर वाइब्रेशन किया तो 1500 किलोमीटर में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो वो वाइब्रेशन. एक होता है रोलिंग टेस्ट. कभी कभी बॉक्स भारी होता है तो वर्कर लोग उसको रोलिंग करके ले जाता है. तो रोलिंग में क्या आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. अगर बॉटल है तो उल्टा कर दिया तो लीकेज तो नहीं है, तो वो लीकेज टेस्ट के लिए आपको अलग से बॉटल का वाइब्रेशन वैक्यूम लीकेज का एक टेस्ट होता है, वो करना होता है. रोलिंग टेस्ट करके आप देख सकते हैं. एक होता है इंक्लाइन इम्पैक्ट टेस्ट. इंक्लाइन इम्पैक्ट क्या होता है? रेल में शंटिंग होता है, वो दीवार के साथ टक्कर लगता है, तो उसके लिए एक हमारे पास एक लेबोरेटरी में होता है एक प्लान ऐसा स्लैंटिंग एक प्लेटफॉर्म, और उसके सामने जाके वो धक्का मारता है, दिखा दूंगा मैं आपको. तो वो बोलते हैं इम्पैक्ट टेस्ट. इम्पैक्ट में साइड में इम्पैक्ट होने से कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं होगा. एक होता है ड्रॉप टेस्ट. वर्कर आपको जब लोड अनलोडिंग कर रहा है, देयर में भी चांसेस ऑफ ड्रॉप. हेवी बॉक्स होगा तो वो जनरली 2 आदमी उठाता है. अगर सिंगल 20 किलो 25 किलो तक होगा तो आदमी सर पे लेके जाता है एंड गिरा देता है. तो वो अगर गिराने से आपका प्रोडक्ट तो खराब नहीं होगा. दैट यू कैन सिमुलेट इन द लैबोरेटरी एंड डू द टेस्ट. एंड स्टैकिंग लोड टेस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ट्रैक में जो मटेरियल जा रहा है के ऊपर है, तो देन द लोएस्ट बॉक्स इज टेकिंग मोस्ट ऑफ द लोड. तो जितना लोड वो ले सकता है वो हमें लैबोरेटरी में पहले एस्टिमेट करा जा सकता है बाय डूइंग कंप्रेशन स्ट्रेंथ, बाय डूइंग स्टैकिंग लोड टेस्ट. ठीक है, ये देखिए ये वाइब्रेशन टेबल है. ऐसे टेबल में कंटिन्यूअसली वाइब्रेट किया जाता है. ये भी वाइब्रेशन टेबल है, उसमें रखने के बाद कंटिन्यूअसली ऐसे रेफ्रिजरेटर है, उसमें रखा है. रेफ्रिजरेटर का कभी बल्ब कट जाता है, कभी आईसी टूट जाता है वाइब्रेशन से. उसी हिसाब से वो डेवलप करता है अपने प्रोडक्ट को. ये आपका है ना इक्विवेलेंट वेट रखना होता है. रखने के बाद वाइब्रेशन भी किया जाता है कभी कभी. इसको इक्विवेलेंट वेट रख के उसको वाइब्रेट करो और देखो आपका बॉक्स डैमेज तो नहीं हुआ, अंदर में प्रोडक्ट तो डैमेज नहीं हुआ. थैंक यू. So, thank you sir for very informative and very useful lecture. I hope that all the participants will greatly benefit, because sir was telling that some training programs are also going on this, so you can enhance your skill as per your requirement by undergoing this in the Indian Institute of Packaging.
part. So now I request you, sir, from just sir, as a token of this photo. MSME sponsored So thanks a lot. Thank you, sir.